Hello everyone, welcome to our S.I.R channel. So today we are going to discuss about the Elizabethan period or Elizabethan age. Okay, so let's start from the Queen Elizabeth. Okay, so she was belonged to Tudor dynasty. Okay, Queen Elizabeth the First was belonged to Tudor dynasty. She succeeded to the throne after the terrifying reign of her half sister Queen Mary. Okay, after her half sister Queen Mary, she succeeded to the throne. Queen Mary was a Catholic and executed thousands of Protestants. That's why she was nicknamed Bloody Mary. Okay, Queen Mary was called or nicknamed as Bloody Mary just because of she was a Catholic and she executed thousands of Protestants. That's why she was nicknamed as Bloody Mary. Queen Elizabeth was a very tolerant ruler. One of her mottos was "Video at Ashu." Okay, so she was a very tolerant ruler. And she, as she was a Protestant, but she doesn't have any issues with Catholic. Okay, she does never attacked the Catholics. Okay, से कहा को भी बाध्य करुनथिले कि नहीं कौन से कैथलिक्स को भी बाध्य करुनथिले कि कौन से प्रोटेस्टेंट को भी बाध्य करुनथिले. ओके, तो से तांका पीरियड रे गोटे लिबर्टी थिला. ओके, माने लाइक समस्ते निज निज हिसाब रे निज फ्रीडम रे चलुथिले. ओके, तो सेटा गोटे शांति एरार एज रो चिन्ह थिला हमर. ओके, England's victory against the Spanish Armada in 1588 is considered one of the greatest military victories in English history. Okay, in English history, Spanish Armada in 1588 was considered as the greatest English victory. Okay, and the victory associated with Queen Elizabeth, and that made England a superpower. Okay, सो ये जो स्पैनिश आर्माडा होता 1588 रे सेटा क्या सहित एसोसिएटेड थिला ना क्वीन एलिजाबेथ को सहित जोड़ा कि गोटे तांको सुपर पावर टाइप रो देथिला. हर रेन इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री. ओके, तांको पीरियड टाको कौन कह जाउतला ना गोल्डन एज बोली कह जाउतला. कहीं ना से आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता, लिटरेचर डेवलपमेंट होता, लाइक इकोनॉमी भी बहुत साउंड और वेल्दी थिला. ता सहित आमर साइंस भी डेवलपमेंट होता. ओके, द पीरियड वाज जस्ट लाइक फ्लो, द लिटरेचर वाज फ्लोरिश्ड एट दैट टाइम. ओके, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री. She never married, hence she is called as Virgin Mary. Okay, से एलिजाबेथ के बाहा ही नथिले, she didn't get married and she was called as Virgin Mary. Okay, she portrayed herself as the symbol of English nation and identity. Her appearance was crafted to attract nationalism, loyalty and adulations from her people. Okay, तो से निजको कौन रूपे पोर्ट्रे करथले कि like she was the identity and she was the symbol of English nation. Okay, she didn't get married and she remains herself bachelor. like से कहते कि कौन ना मोर पूरा लाइफ टा मु एमती बिना मैरिज करिकी पूरा ही मो कंट्री को खाली सर्व करिकी तुम मान सब्जेक्ट्स मान प्रजा मान पूरा लाइफ टा को से डेडिकेट करदेवे. दैट्स व्हाई शी वाज कंसिडर्ड हरसेल्फ एज द आइडेंटिटी एंड द सिंबल ऑफ द इंग्लिश नेशन. नेक्स्ट, the Elizabethan age is the time period associated with the reign of Queen Elizabeth, which is from 1558 to 1603. Okay, and it is often considered to be old golden age in English history, which we have discussed before. During the time when Europeans were starting to break out the cultural constraints imposed by the medieval church. At this time, okay, the Europeans were starting to break out the cultural constraints which was imposed by the medieval church. Okay, cultural constraints means the medieval church has imposed them to that what to do or what not to do. Okay, that is something which is imposed by the medieval church towards the people, that what should to do or what shouldn't to do. Okay, it is the period marking the transition from the medieval to the modern. This is the period of the transition from medieval to modern period. The Renaissance gave rise to growing interest in man as presented in classical, which is Greek and Latin drama, which had examples of both comedy and tragedy. Okay, a time ta a age ta
जोटा कि रेनेसा को गोटे ग्रोथ देइथिला ओके रेनेसा मीन्स द रीबार्थ ओके द रीबार्थ ऑफ द क्लासिकल ड्रामा which is the Greek and Latin drama and which had examples of both tragedy and comedy. A revolutionary period in many aspects: society, culture, language, poetry, drama, exploration, science, travel, religion, etc. Okay, in the Elizabethan period, people have the like it is like just the revolutionary period for them, for people. Okay, because of there is many revolutionary things in many aspects, just like society रे भी changes आसुथिला, कल्चर्स भी डेवलप होता कल्चरल एक्सचेंज होता जस्ट बिकज ऑफ रेनेसार स्टार्टिंग होता दैट्स वाई तो ये सब जिनस भी स्टार्ट हबार लगी से आम गोटे एज को गोल्डन एज बोली कहुचे कौन ना कल्चर एक्सचेंज होता डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आसूला लैंग्वेजेस डेवलपमेंट होता पोएट्री भी डेवलपमेंट चलता ड्रामार भी होता आ एक्सप्लोरेशन केमती होता ना टूडो डायनास्टी जमी एलिजाबेथ कौन करुले ना निजे तांकर से समय जो कोर्ट कौन करुला ना दौला लोक मानू कि शिप निय आ निजे ही एक्सप्लोर कर अलग अलग कंट्रीज ओके तो यही टाइम रे कॉलोनियलाइजेशन भी बढ़ी दैट्स वाइज इंग्लिश पीपल माने चारिआडे थ्रू द सी और ओके तो एक्सप्लोरेशन बढ़ी नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करते नुआ नुआ जिनस एक्सप्लोर होता ओके एंड द साइंस वाज आल्सो डेवलप्ड ओके इन दैट टाइम पीरियड ओके साइंस भी डेवलपमेंट चलता ट्रैवल भी होता रिलीजन भी होता ओके English Renaissance was greatly influenced by Italian Renaissance. Okay, English Renaissance was greatly influenced by the Italian Renaissance. A greater focus on human capacity, knowledge, wisdom, and cultural refinement. Okay, in this period, the focus was on human capacity. Humanism उपरे लोकमानंक उपरे व्यक्ति विशेष मानक उपरे बहुत फोकस होतला. Then knowledge उपरे होतला, wisdom आउ cultural refinement उपरे होतला. Okay, the A's focuses on human capacity, knowledge, wisdom, and cultural refinement. Then literature saw great development as lyrics, sonnets, and drama were taken to the highest level of literary excellence. Okay, literature saw great development as lyrics development आस्तिला, sonnets आस्तिला, drama गुड़ाक गोटे हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस को चल गोटे ग्रोथ होता लिटरेरी डेवलपमेंट ओके द स्पिरिट ऑफ रेनेसा ब्रॉट विथ इटसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी तो रेनेसा आसीथिला से सहित कौन नहीं आसला ना रेनेसा मीन्स वी नो दैट द रेनेसा मीन्स रीबर्थ ऑफ समथिंग ओके रीबर्थ okay rebirth what is rebirth and the Greek and the Latin drama okay the renaissance of cultural humanism and the cultural constraints and the cultural refinements ता सहित कौन नहीं आसला रेनेसा ना एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी को भी सांगरे नहीं आसला As England grew in maritime power more and more ships were commissioned for business, scientific exploration and even more and mere interest in the sea. जेतु इंग्लैंड रो मैरिटाइम पावर बढ़ी था इन द सेंस शिप्स जाऊला से माने रूट्स खोजी सारी मैरिटाइम जो आमर थ्रू द सी ओके दैट्स वाई इट वाज शोन द डेवलपमेंट इन बिजनेस ओके दैट्स वाई इकोनॉमी भी ग्रो करता कहीं से को कंट्री रू लाइक जमती चा चाइना रू इंडिया रू कॉफी ओके सिल्क सब आस्ते 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 अन्य कंट्री रू से माने से हिसाब से इकोनॉमी भी ग्रोथ करूला दैट्स वाई ओके द बिजनेस वाज ग्रोइंग एंड द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वाज देयर ओके the world was opening up. It was the age of discovery. Okay, this was the age, the Elizabethan age was the age of discovery and the world was opening up. आस्ते आस्ते वर्ल्ड ओपनिंग अप होता तांका पाई इंग्लिश पीपल मानक पाई आस्ते आस्ते से रूट्स देखुले को कंट्री रे कौन अच्छी जानुले ओके डिस्कवरी तांका पाखरे बहुत टाइम थिला लेजरली एक्टिविटीज करिया पाई बहुत टाइम थिला काहे ना तांकर बहुत कंट्रोल्ड तांको टेंशन नथिला तांको इकोनॉमी पाई टेंशन नथिला वॉर पाई टेंशन नथिला ओके बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ हैड अ वेरी गुड मिलिटरी पावर दैट्स वाई दे लिव्ड अ गुड लाइफ ओके गोटे शांति गोटे पीसफुल लाइफ से माने बंची पड़ते कहीं क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट कर मिलिटरी पावर जो ओके से बहुत शांति सबुआड़े चलता से एजटा बहुत स्मूथ चलता
दैट्स वाई से बहुत लेजरली एक्टिविटीज करूला टाइम थिला प्रॉब्लम नथिला तांको इकोनॉमी पाई कि तांको इश्यूज पाई तांको वार पाई दैट्स वाई से बहुत टाइम दे पड़ते तांको आर्ट और कल्चर को ग्रो करने दैट्स वाई बहुत भल भल ड्रामा भी फ्लोरिस्ट होता से टाइम and there is the interest in supernatural powers, witchcraft, necromancy, all etc. also witnessed and increased interest. Okay, सेतबले कौन होतला ना सेतबले supernatural power भी interest होतला ता सहित witchcraft आउ necromancy एगुड़ा भी देखा जाउथला. ओके आमे देखिबा डॉक्टर फर्स्टस रे क्रिस्टोफर मार्लो फर्स्ट टाइम पे से प्ले ड्रामा प्ले को देखैथि जोथरे हमर necromancy आउ witchcraft रा symbols अच्छी. Okay, next the political features was the settlement and expansion. In settlement, in politics, England achieved stability under the reign of Queen Elizabeth. Okay, Queen Elizabeth का period रे English people को करा stability थिला, England रे stable है कि थिला सब जिनस. Okay, due to this stability, drama flourished. As I have told you that they don't have any issues in life. Okay, तांको military power बहुत strong थिला, इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थिला, वॉर इश्यूज न थिला. ओके दैट्स वाई द ड्रामा फ्लोरिज जस्ट बिकज जब तक लेजरली एक्टिविटीज पारे इनफ टाइम थिला. दैट्स वाई लोक मैंने कल्चर आउ आर्ट को डेभलप करने चाहिए से ड्रामा फ्लोरिज थिला. द एंसिएंट क्वारल बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लिश वाज आल्सो सेटल्ड. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भितर जो एंसिएंट क्वारलटा चलता सेटा भी सेटल हो जाइथिला. द सेटलमेंट वाज अ ग्रेट फॉर लिटरेचर. सेटा गोटे बहुत बड़ा हेल्प करता क्या ना लिटरेचर पाई. एक्सपेंशन ने जाऊँगी आमर कौन ना मेनी ग्रेट वॉयजेस ट्रैवल टू वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ गोल्ड. ओके इन सर्च ऑफ गोल्ड द इंग्लिश पीपल हैव ट्रैवल टू द वेरियस कॉर्नर्स जस्ट बिकज तंग मैरीटाइम पावरटा बढ़ी जाइथिला. आउ क्वीन एलिजाबेथ निजे ही कहूले ऑर्डर दौले कि जाइकी निजे एक्सप्लोर कर कॉर्नर्स जाइकी कंट्री वर्ल्ड रो. ओके their exploits are chronicled in the works of Richard Hakluyt. This is the era when colonization started. Okay, a era ru hi colonization ta start hitila. The scientific methods of Francis Bacon led to the scientific revolution in this age. A age रे scientific methods Francis Bacon करा scientific revolution भी आनी थिला. The Renaissance, which is started from 1490 to 1603. It means the rebirth of ancient Greek and Roman civilization. Okay, Renaissance means here the rebirth of ancient Greek and Roman civilization. Renaissance began in Italy, then Rome was the center of Renaissance. Renaissance Italy ru start hela, और the center कोटा हैतिला Rome हैतिला. Okay, cultural diffusion and Renaissance humanism was there. Cultural diffusion in the sense जनक cultural exchange हबा, अन्य क्या कल्चर को आम अडाप्ट करवा, आम कल्चर को से अडाप्ट करेंगे. ओके देयर वाज कल्चरल डिफ्यूजन एंड द रेनेसां ह्यूमनिज्म जोटा कि ह्यूमन उपरे फोकस होता, ह्यूमनिज्म उपरे फोकस होता. It was an age considered to be the height of the English Renaissance and saw the full of flowering of English literature and English poetry. Okay, it age of Renaissance थिला आउ देखा जाउतला English literature और poetry रो मध्य development हितला. In Elizabethan theatre, William Shakespeare, among others, composed and staged plays in a variety of settings that broke away from English past styles of plays. Okay, so the Elizabethan theatre रे William Shakespeare के सहित other plays dramatist कर मध्य plays आसीबा screen हितला देखिबा को मिलिथिला. Okay, it was an age of expansion and exploration abroad. बाहर exploration हितला एवटा age of expansion and exploration. While at home, the Protestant Reformation was established and successfully defended against the Catholic powers of the continent. Okay, so किंतु इंग्लैंड से तबले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जोटा चलथिला जोटा कि सक्सेसफुली डिफेंड हितला जोटा कि कैथलिक पावर्स आगे. The Elizabeth age is viewed so highly because of the contrast with the periods before and after. It was a brief period of largely internal peace between the English Reformation, with battles between Protestants and Catholics. Okay, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପିସଫୁଲି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା. କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ଏଲିଜାବେଥ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ କିଛି ଏମିତି କୌଣସି
harsh steps nounatile against Catholics. Okay, she always want to maintain the peace between Protestant and Catholics. Okay, she was just like to she didn't force to anybody. Okay, she didn't force to any Catholics. Okay, that's why ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ peace maintain ହେଇକି ରହିଥିଲା. The battles between parliament and the monarchy that would engulf the 17th century, the Protestant Catholic divided was settled for a time by the Elizabethan religious settlement, and parliament was still not strong enough to challenge royal absolutism. Okay, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯାଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ରୟାଲ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟିଜିମ୍କୁ. ଓକେ, ବଟ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ, କାହିଁକିନା ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ. ଓକେ, ସେତେ ପିସ୍ଟା ବନିକି ରହିଥିଲା, ସେତେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସେତେ ଚାଲି ନଥିଲା. ଓକେ, the Protestant Catholic divide was settled for a time, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, by the Elizabethan religious settlement, and parliament was still not strong. କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ସେତେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟିଜିମ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ. ଓକେ, ସୋ ଫର୍ ଟୁଡେ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା. ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ମୋର୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଏଲିଜାବେଥନ୍ ଲିଟରେଚର୍, the characteristics of literature, and we'll talk about more about the drama and poetry section. Okay, thank you so much.